अरे वो इनके बिना तो लाइफ है ही नहीं मेरी। अभी मेरे को 1.5 साल से संभाल रहे हैं, मुझे बोन कैंसर है, माइलोमा है। तो सारा ट्रीटमेंट यही करवा रहे। मेरे साथ सुबह जाते हैं तो ये सारी रात बैठे रहते थे और मैं कहती थी सो जाओ, कहते नहीं, अगर ये बॉटल ब्लॉक हो गई तो पूरी रात बैठे रहते थे। My name is Darshan Kumar Dhawan. I'm a veterinary doctor. जो रिटायर हुआ था फ्रॉम सम एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ विद्या स्टेट। मेरी मैरिज हुई संगीता धवन से। दोनों मैं मेरी मिसेज इतना घूमते थे कि ऑल ओवर हमने इंडिया देखा हुआ है कि व्हेन आई वाज इन सर्विस तो आई वाज ए स्मोकर। स्मोकर होने से मुझे COPD थी, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज। उससे क्या था, मैं चलता था तो मेरा सांस फूलता था, तो आई टुक इट वेरी लाइटली, ये कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं है, इतना विश्व भर में थोड़ा बहुत होता ही है। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि मेरे ना चला जाता था। इवन बाथरूम में जाकर नहाना में मेरे लिए दिक्कत हो जाती थी कि घूमना तो खैर हो ही रहा ही था, अंदर बैठना। और किसी तरह से हर एक को मेरा स्वभाव भी बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, जिससे कि मुझे बड़ा फील होता था कि ऐसा मैं कैसे बनकर लिया है। मैंने 2D इको कराया क्योंकि मुझे चलने में दिक्कत आती थी, गार्डनिंग करनी होती तब दिक्कत आती थी, मेरा आना जाना बंद हो गया। तो उसमें मेरा जो 2D को बड़ा वस्त आया, तो मैं दिखाने के लिए कि ये बात है, तो कहना डाउन साहब ये तो गड़बड़ है, इमीडिएटली रिक्वायर्स सम ऑपरेशन। मैं कहा मेरा ऑपरेशन हो नहीं सकता क्योंकि हम ऑलरेडी COPD पेशेंट, सांस की तकलीफ है मेरे। कि मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं डॉक्टर, कोई प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज है, कोई एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज है, उनसे पूछ। तो उन्होंने कहा धवन साहब ऐसा है कि आप इस ऑपरेशन को इमीडिएट कराओ, जैसे कोई भरोसा नहीं आपका। मैं कहा ऐसा कैसे कहती हो, कोई भरोसा नहीं कर रही है। My name is Dr. Prashant Dwivedi. I am working at Eternal Hospital, Jaipur, and I am an interventional cardiologist where the patient cannot go for a valve surgery, where we treat the patient without open heart surgery. So it can include all type of valve surgery and all type of valve replacement without open heart surgery. In the heart, there are basically 4 major valves: aortic, mitral, pulmonary, and tricuspid valve. So the aortic valve is basically a valve which is situated between the heart and the major pipe that is known as aorta. Heart usually pumps out the blood, and the blood is being circulated all across the body through the pipe which is known as aorta. So this valve is basically situated between these two anatomies. So as the patient as age advanced, or in older patients, this valve get stenosed. And how this stenosis? Because of the deposition of the calcium, and this narrowing and deposition of the calcium leads to the narrowing of the valve, and this narrowing of the valve is basically known as aortic stenosis. So whenever a patient having a aortic stenosis, so it never happens immediately. It develops over a period of time. So whenever a patient has diagnosed with aortic stenosis, if the patient is diagnosed with a mild aortic stenosis, then the patient has to go for a serial echocardiography every 6 months or 1 year to get to know when the patient has developed a severe aortic stenosis. The time of intervention or time of any procedure, whether it's a open valve replacement or a transcatheteric aortic valve replacement, is the patient when the patient becomes symptomatic or a patient develops severe aortic stenosis. So when the patient develops severe aortic stenosis, what are the symptoms? Symptoms are usually the chest pain, breathlessness, and sometimes patient develop giddiness or a syncope. Sometimes a patient may develop sudden cardiac arrest. That's why the patient who have a severe aortic stenosis should go aortic valve replacement as early as possible. So there are 2 options of replacement of the aortic valve. One is the surgical aortic valve replacement and another is the transcatheter aortic valve replacement. Surgical aortic valve replacement is also known as SAVR, and the transcatheter aortic valve replacement is also known as the TAVR. So the difference between these 2 therapy is, the one is surgical, it means the patient has to go with the open heart surgery, in which the chest is being opened, patient is being kept on ventilator with a general anesthesia, and then we open the heart and then we replace the valve. That is required around 2 to 3 hours procedures, and patient has to be on a ventilator, and then a patient
required at least 3 to 4 months of recovery time to maintain his daily routine activities. While the transcatheter aortic valve replacement is a non-invasive, quick, fast with a rapid recovery. So basically in the TAVR procedure, what we do is we puncture a femoral artery in the groin, and with the femoral artery we pass some catheters across the aorta, and then we cross the aortic valve and we enter in the heart. After entering into the heart, we do some ballooning across the aortic valve to make some space, and then we put a new valve which is situated inside the prior valve, and the valve start functioning immediately, in which we do the procedure in just 45 minutes to 1 hour. The procedure is being done without open heart surgery, without any general anesthesia, and without any major cut in the body. After the procedure, patient is conscious, alert, and after 3 to 4 hours, patient can eat something, and after 24 hours, patient can start walking. After 24 hours, patient can be shifted to the room, and then after 2 to 3 days, patient can go home. All the patients should not go for a TAVR. There are certain indications which patients should go for a transcatheter aortic valve replacement. So the aortic stenosis, which can develop even in a younger age patient, like in a childhood patient when the patient had a different deformity in their valves, in those patients still the surgical aortic valve replacement is open heart surgery is still the gold standard for the treatment. But the patient who is more than 65 years of age, and the patient who has a multiple comorbidities like a lung issues, like a liver issue, or other issues like a cancer or other comorbidities where the patient can be on a higher risk for the open heart surgery, those patients should go for a transcatheter aortic valve replacement. He came to us in a very bad situation. He had a severe breathlessness on exertion, and he landed up in the emergency room with a severe breathlessness. He also have a very bad lung issues. Because of that, he was very high risk situation. Initially we stabilized him with some medication, and then we find out that his aortic valve is also very narrow. Before coming to the hospital, he was not able to lie down for a few weeks in a straight position. So as the patient age was 81 years, so that we decided to go with a transcatheter aortic valve replacement. So any patient whose age is more than 80 years should be offered only the transcatheter aortic valve replacement, while the patient who is having 65 to 80 years of age can go for the surgical aortic valve or the transcatheter aortic valve replacement. So did the echocardiogram. After that we did the CT scan. CT scan is basically the CT scan of the heart as well as the CT scan of the aorta, so that we can evaluate what exactly is the situation of the valve, what exactly is the calcium distribution, and which size of valve, what type of valve would be the best for the patient. मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर द्विवेदी के पास गया, तो आगे तो जो मेरा आया था CT स्कैन, उसमें डॉक्टर द्विवेदी ने द्विवेदी जब था कि दास साहब आपके इंडियन वाल सूट करते हैं आप। अब मुझे नहीं यानी कि मुझे कुछ सेडेशन दिया है या नहीं दिया, लेकिन क्योंकि मैं पूरी होश आवाज में था, उनकी बातें ही सुन रहा था जो बात कर रहे थे. We went through the femoral artery and we replaced the valve within a period of 1 hour. After the procedure, patient was completely alert, conscious, and he was talking. And after 3 days, we discharged the patient. After time मेरा जब ऑपरेशन हो गया तो पोस्ट ऑपरेटिव जो मेरी केयर थी वो भी प्रॉपर हो गई, तो मैं घर आ गया. घर आके मैंने अपना रूटीन शुरू कर दिया. इवन अंदर मॉर्निंग में उठता था, उठ के चाय बनाता था, खुद चाय बनाता था, और चाय बना के फिर मैं थोड़ा वॉक करता था, और इवन मैं प्राणायाम वगैरह भी करता था. नहीं, पहले से बेटर हो, अच्छी तरह चल लेते हैं, सांस कंट्रोल है और अपना काम कर लेते हैं. पहले थोड़ा सा मेरे को ही आवाज़ें लगाते रहते थे, ये पकड़ाना, वो पकड़ाना, ये चीज़ लाओ, वो लाओ. अब ये अपने आप से, पहले मैं इस पर डिपेंडेंट था. अभी ये सब इवन मेरे को भी चाय पिला दे. तो मैंने सोच लिया मैं घूमने जाऊंगा, ब्यावर जाऊंगा, ब्यावर से मैं उधर घूमने निकलूंगा. दिल इच्छा हुई तो दिल्ली चला जाऊंगा, और इच्छा मेरी ये भी हो रही है कि मैं ईस्ट की तरफ हो गया हूँ. इवन फॉरेन में मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी देख के आऊँगा. अपने सारे पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, चाहे वो चेस्ट पेन हो, ब्रेथलेसनेस हो या गिडीनेस हो रहा हो, तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करें.
इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से मानें, क्योंकि ट्रीटमेंट जरूरी है। मुझे मालूम है कि मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ, तो हार्ट ये परमानेंटली और लाइफ ये 16 साल का हार्ट हो गया।